इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। मिक्स करेंगे अच्छे से। हम इसे 5 मिनट तक मिक्स करेंगे ताकि कोई डालेंगे नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, हल्का सा लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर और बेकिंग पाउडर, और फिर से मिक्स करेंगे। मिर्च, थोड़ा सा प्याज, टमाटर और हरा धनिया कटा हुआ। हमारा मिक्सचर रेडी है। हम तवे पे थोड़ा सा तेल डालेंगे, चाहे तो बटर भी डाल सकते हैं। अच्छे से स्प्रेड करेंगे इसको। ये कर चुका है साइड से, और इसको फ्लिप कर देंगे। दोनों साइड से पक चुका है, तो हमने स्टैंड रेडी।